in the meantime, let's talk about what's happening in the national capital, because after 2 days of hectic activity, all headlines that showed Prime Minister Narendra Modi with the lineup of the AI world's most powerful figures, including OpenAI CEO Sam Altman, Anthropic CEO Dario, there was Google DeepMind CEO Demis Hassabis. Now, Congress party, however, saw this as an opportunity to rather embarrass India. When the Indian startups were showcasing innovation, Congress's startup politicians were showcasing their best. Literally, this is what happened. When young founders were pitching AI models, Rahul Gandhi's Gen Z Sena was actually raising high-pitched anti-Modi slogans, and that too where? Inside Bharat Mandapam. When global investors were watching, Indian Youth Congress Karyakartas were walking shirtless. And after staging a planned protest to embarrass their own country on a global stage, Congress party somehow is very proud of their Karyakartas and coming out to congratulate them. डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट करने से कोई छवि खराब नहीं होती। छवि खराब तब होती है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट से सलाह लेकर इजराइल जाके नाचते गाते हैं, तब देश की छवि। प्रोटेस्ट कैसे किया जाए? देश का प्रधानमंत्री सुने ना, देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलने का टाइम ना दे, देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट आने से भाग जाए। However, what the Congress party seems to defend, their own allies seem to find it difficult and calling it rather disgrace of what has happened inside Bharat Mandapam. And this is coming from no less as far as an ally Samajwadi Party is concerned, saying that the Youth Congress Karyakarta should have rather chosen a different platform to register their protest, while even when it comes to ally RJD has called it as a bad option and a bad timing on part of Congress Karyakartas to stage a shirtless protest. देखिए, लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना, प्रदर्शन करना, धरना देना, ये पॉलिटिकल पार्टी का भी एक अधिकार है और आम आदमी का भी अधिकार है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जिस प्रकार यूथ कांग्रेस के साथियों ने वहां पर उग्र प्रदर्शन किया और पूरी की पूरे देश के सिस्टम के खिलाफ ही जिस प्रकार का बर्ताव किया, ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में इतनी शुचिता का भान होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे आपकी पूरी पार्टी तो कहीं तकलीफ में नहीं आ जाएगी। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस कृत्य से नाराज है और राहुल गांधी जी ने ऐसा पाठ कभी युवाओं को नहीं सिखाया है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और हमें लग रहा है कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। हम सरकार से नाराज हो सकते हैं, सरकार की कुनीतियों का विरोध कर सकते हैं, बहुत सारी खामियां हो सकती है, लेकिन जब बात टेक्नोलॉजी की हो, बात विकास की हो, बात डेवलपमेंट की हो, तो उसका विरोध कम से कम हमारी पार्टी तो नहीं करती। हमारे नेता तो युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं, नई नई पॉलिसीज का वो समर्थन करते हैं, पर्यावरण हो, AI हो। Well, Kritika is with us right now. Kritika, at any point, such an act can be defended, well, even when it comes to the allies of the Congress are having a hard time. Well, absolutely. In fact, this is the chorus that even the youth whom we were speaking to yesterday at Bharat Mandapam were also saying, that while protesting is a democratic right, this is not the arena for politics. The AI summit is being organized under the name of the nation, not of one political party. Hence, it does not make a lot of sense, at least. All right, we'll just come back to you, Kritika, because we're expecting a BJP protest as well that would be taking place today outside Congress headquarters. Thank you very much for joining in. Let's straight away go across to those live pictures.